हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरल इंग्लिश एट साकार इंस्टीट्यूट। आज मैं आपको कुछ ऐसी मज़ेदार बातें बताऊंगी कि आप भी सोचेंगे, अरे हमने तो कभी पहले ऐसे सोचा ही नहीं। फाइन। सो ये होता है थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करने से। जब हम कोई लैंग्वेज को स्टडी करते हैं या उसको थोड़ा सा ऑब्जर्व करते हैं तो हमें पता लगता है, ओह जब हम ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है, ऐसे करते हैं तो ऐसा होता है। और इंग्लिश अपने आप में हम सब जानते हैं, इट्स अ वेरी कंफ्यूजिंग लैंग्वेज एज फार एज द प्रोनाउंसिएशन इज कंसर्न्ड। फाइन, बिकॉज इंग्लिश में कई बार सी आपका क बन जाता है, कई बार स आपका श बन जाता है, कई बार प आपका फ बन जाता है। क्लियर? कई बार प की बेचारे की आवाज़ ही नहीं आती, कई बार के और एन इकट्ठे आता है तो के की आवाज़ नहीं आती। तो ये चक्कर क्या है? चक्कर कुछ नहीं है, बिकॉज देर इज एक्चुअली नो रूल बिहाइंड इट। क्लियर? बट it is like through some observation, and when we observe certain patterns we have tried to derive certain things कि हाँ इन केसेस में ऐसा हो सकता है। फाइन, तो इसको आप स्ट्रेस लेकर मत सुनिए, इसको आप सिर्फ एक मज़ा लेकर सुनिए। सो टुडे लेट्स टॉक अबाउट द लेटर सी, कि सी हमें कैसे गोल गोल घुमाता है। सी में अगर आप देखेंगे कि सी ए पी तो हो जाता है कैप। फाइन, लेकिन अगर आप कहेंगे कि सी ई एन टी तो हो जाता है सेंट। अरे सी से कैप और सी से सेंट, ऐसे कैसे? बट यही है इंग्लिश की खासियत कि इसकी कोई खासियत नहीं है। क्लियर? But because English is an important language these days, it's the main medium of interaction and communication among people around the world. That's why we have to learn this language, because it brings us on a common platform where we can actually interact and communicate with each other. So, let's learn some mazedar baatein about the letter C. Now, C letter, if it is followed by the letter A, L O R U, क्लियर? सी के इमीडिएटली बाद अगर आपका A L O R U आ रहा है तो इन सब जगहों पर हमारा जो सी का प्रोनाउंसिएशन होता है दैट कम्स आउट एज क। फॉर एग्जाम्पल, इफ यू टेक C A P कैप, क्लियर? C A T कैट, cap, cat, can, clear? Then we say cappuccino, clear? Then we say cater, fine? Then we say capable, clear? So in all these words we are seeing that C is followed by the letter or vowel, you can say A. Okay. Now if C is followed by the letter L, there also the pronunciation is like it's the sound is k, like clap, clear? Class, then you say clutter, then you say classify, claustrophobic, clear? तो यहाँ पर हमारा जितने भी वर्ड्स हैं उनमें हम देख रहे हैं कि immediately after C we are using the letter L, clear? Okay. If C is followed by the letter or vowel O, then also the pronunciation is, or the sound is K. Fine? Like coffee, fine, cold, cozy, copy. Then you say cosmopolitan. Then you say couch, corner. So in all those words we are seeing that C is being followed by the letter O. तो यहाँ पर भी जो C की आवाज़ होती है वो क की तरह आएगी. And then you will notice that if after C, if we are having the letter R, that is C is being followed by the letter R, तो उस केस में भी आवाज़ हमारी कैसी निकलती है? क. For example, crow, crane, crumble, crust, crush. Fine. So in all these words we notice that C is being followed by the letter R, तो आवाज हमारी निकलेगी क की. If C is followed by the letter U, then also the sound is k. For example, CUP, cup, CUB, cub, CUT, cut, CUTTER, cutter. Clear?
cushion. Fine. Then you can say cube, Cuba. It's the name of a place. Fine. So in all these words we are seeing that C is being followed by the letter or the vowel U. So here also the sound is K. लेकिन कई बार हम सुनते हैं कि ओके बताओ भाई सर्कल की क्या स्पेलिंग है. सर्कल की स्पेलिंग एस से होगी बिकॉज स साउंड है ना. नो डियर, सर्कल की स्पेलिंग भी शुरू होती है सी से. ये कैसे? यस, मेनी केसेस में सी इज प्रोनाउंस्ड एज स व्हेन फॉलोड बाय सर्टेन वर्ड्स. फॉर एग्जांपल, इफ सी इज इमीडिएटली फॉलोड बाय योर लेटर आई, E, Y, in those cases you would see that mostly हमारे जो C की जो आवाज है वो स से निकलती है. Like if C is followed by I, circle, clear? Circumference, then you say circus, clear? Then you have civil, cinema, cigarette, cigar, civic. Clear? So in all these words we are seeing that C is being followed by your letter or your vowel I. Okay, if C is followed by your letter or vowel, you can say E, then also the sound comes out as S. For example, center, cell. Fine. Then you have celebrate. Then you have certain. Fine. Scent. Perfume wala nahi. C-E-N-T, scent. So in all these words we are observing that C, if followed by your vowel E, it will have the sound S. Then if C is followed by your letter Y, there also the sound is S. Cycle, cyclone. Fine. Cyclic, cyber, cylinder, Cyrus, that's a name. Clear? So in all these cases what we have learned that pronunciation in English is very tricky. Fine. And you have to like observe certain words, and you have to I'm not saying it you have to learn the rules because there are no rules for it. इसके लिए कोई rules हैं ही नहीं. वो क्या होता है कि जब आप कोई लैंग्वेज को बार बार सुनते हैं, पढ़ते हैं, बोलते हैं, then automatically it registers in your mind and you become like more confident and more comfortable with the language, and then pronunciation doesn't remain a big problem for you. Fine. तो ऐसे ही कुछ मज़ेदार बातों के लिए हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में. हम डिस्कस करेंगे कुछ ऐसे ही प्रोनाउंसिएशन की बातें कि कैसे कोई लेटर कहीं पर वो प बन जाता है, कहीं फ बन जाता है, कहीं क बन जाता है, कहीं क बेचारा होता ही नहीं है. क्लियर? सो टू लर्न ऑल दीज, to learn more about these मज़ेदार बातें, stay connected, stay tuned, and don't forget to like, share and subscribe. Bye bye.